कर रहा हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है और जो सब्जेक्ट है हमारा वो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक जावेद है। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने जो है वो मैंने आगा खान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीज़न में 10 साल से ज़्यादा काम किया है। जो मेरा डिपार्टमेंट था वो नेटवर्क सपोर्ट था। तो इस एरिया में काफ़ी हद तक मैंने हैंड्स ऑन काम किया है, लेकिन 2011 में मैं पीएचडी कंप्लीट कर लिया था नेस से। तो फिर मैं एकेडमिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया और ये जो कोर्स है एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये मैं 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ और ये तीसरी दफ़ा जो है वो मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हो रहा है। तो इसका मैं आपको लिंक शेयर कर चुका हूँ। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो कोर्स इंफॉर्मेशन एक शीट नज़र आएगी। उसमें मेरे बारे में थोड़ी सी टीचर क्या जो डिटेल्स हैं, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा कोर्स डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कोर्स आउटलाइन जो कोर्स इंफॉर्मेशन शीट है, दिस इज इक्वलेंट टू कोर्स आउटलाइन। So computer networks playing an important role in our daily life. किसी टाइम में जब हम अपने स्टूडेंट थे, इस वक्त ये बात थोड़ी पुरानी है, 94 और 99 के 98 के दरमियान। उस वक्त जो कंप्यूटर नेटवर्क्स थे उनका बूम था और एवरीवन जो है वर्किंग टुवर्ड्स सम सर्टिफिकेशन ऑन नेटवर्क्स। और इसमें जो है वो सिस्को और जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन वो ज़्यादा फेमस थी हमारे पाकिस्तान रीजन में, जबकि जो दूसरे रीजन थे जैसे जो है वो अमेरिका और यूरोप और मिडल ईस्ट, उसमें जो है वो नोवेल नेटवर्क जो है वो ज़्यादा फेमस था। और इसी तरीके से कुछ और सर्टिफिकेशन जो थी काफ़ी मानी जाती थी। सिर्फ नेटवर्क के हवाले से बात करेंगे। So the systems which carry information and primarily storage capabilities, carrying capabilities, they are challenging. So they are changing the way as we live and do business. और ये काफ़ी हद तक रिसेंट जो चेंजेस आई उसमें ट्रू है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स देखें या कभी जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनके बिजनेस जो रिव्यूज़ हैं उनको देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स हैं उनकी जो अर्निंग्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ इंटरेक्टिव स्टोर्स जहाँ जाके ख़रीदा जाता है ड्यू टू द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड ड्यू टू द रीजनल चेंजेस जो कि इस वबा के ज़रिए असर है। सो इट इज़ ये काफ़ी हद तक ट्रू है। Okay, the objective of this graduate level course are to equip students with an in-depth knowledge of computer network architectures and internet protocols. The student will learn design concepts and develop resolution skills to troubleshoot and resolve problems in computer networks. Actually, ये एक डिप्लोमा लेवल या एक एसोसिएट डिग्री का कोर्स नहीं है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग का कोर्स है। तो थ्योरेटिकल नेचर जो है वो आरबीडीएस होगी। Okay, this course will provide a strong theoretical and conceptual background
further advanced level courses and research work in specialized areas of data communication and network. So this is the a brief description of course. Now we move ahead. So there are some course objectives. Course objective is the teacher review of the course, and as a teacher, I have objectives to primarily deliver the advanced knowledge of principles and practices in the area of computer networks, and to develop thorough understanding of protocols to TCP/IP reference model, and to understand the essential computer network security measures. These are the course objectives and is a teacher's perspective. And there is also a student perspective, which is in the form of learning outcomes. And if we can see, this is also the exam point of view. ये जो है ये exam point of view से भी के लिए भी important है, because this is the agenda for the examination. So describe the history and use of computer networks, and explain the layers in OSI and TCP/IP reference model with examples. Discuss computer network related ideas by using the terminology which is used in computer networks, and diagram a complex computer network using appropriate software tool. Design a computer network for a small business with internet access. Explain common security threats to computer network setup, and evaluate solutions to countermeasure security threats to a computer network. These are the learning outcomes, and as you can see, this is a breakdown of teacher's view, but this is primarily the exam perspective or the evaluation perspective of this course. इस जगह पे मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि if you have any questions at this point in time. जी आप लोगों का कोई सवाल है? Okay, if there is no question. So actually, I have a question regarding that. For example, you are saying that you will just describe in this session about the history and the use of computer networks. So we can do like practice on the packet tracer, or we have to just have a, it will be based on a theoretical base. मुनीब के सवाल को थोड़ा एक दफ़ा रिपीट करूं कि ये जो पहला पॉइंट है, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. दिस इज जस्ट to get familiar with the history and the use of computers. This is just an introduction. This is not as such important, but the other questions are more important than this, in which the question in which you have to explain the second. This is also an explanation. This is the design questions, or the questions which are linked with the design and development of computer networks. These are more important questions. And if we go towards another aspect is the evaluation. So in terms of knowledge criteria, we are primarily addressing the understanding component, as well as the design and development of solution component, as well as the evaluation of solutions component. So this is pretty much a dense criteria about the evaluation component. To make an ease, इसको थोड़ा आसान करने के लिए एक काम भी किया जा सकता है कि जो previous क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो टाइम टू टाइम शेयर कर दिए जाए. That would be great, कहना sir. चाहेंगे? Okay, sir. The question is that because I guess Shahrukh Shakil has asked as well. So it will be like more theoretical based, right?
this whole like course will be on more theoretical rather than practical, right? कि आपका सवाल ये है कि हम थ्योरेटिकल फोकस करेंगे या प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे। देखिए इसमें जो है वो जो करंट जो लाइन ऑफ सब्जेक्ट है वो तो थ्योरेटिकल बेसिस पे है, लेकिन अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट है जो कि 20 मार्क्स का है जिसमें आपका रिपोर्ट और प्रोजेक्ट दोनों चीज़ें हैं, तो आप उसमें जो है वो किसी एक टूल को यूज़ करते हुए जो आपका टॉपिक जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये इस तरीके से है कि थ्योरी है, इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस भी किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये तो वीक वाइज इसकी डिवीजन है। अगर आप यहाँ देखें तो ये इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें इस कोर्स में मेरा जो फोकस है वो प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट के ऊपर है और 10 और 10 मार्क्स में इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो आपके 20 मार्क्स जो है वो रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन से लिंक करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो थ्योरी है, मिड टर्म एग्जामिनेशन है और फाइनल एग्जामिनेशन। हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है कि कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी होने चाहिए, तो वो इस सिलसिले में हमें किसी टूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत सारे फेमस टूल हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है उसमें हेल्पफुल है। जी मुनीब। I guess I got your point. So because I was more like concerned that I we should be like should give any presentation regarding like any practical scenario. So I guess you have just mentioned it. So actually, it is possible that we can have we select a simulation platform. There are many simulation platforms. Even Cisco has provided a few, which are some of them are open source as well. So it is a matter of spending time to go through in depth, but it also depends कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इस कोर्स में क्या है। ओके, बिकॉज यू आल्सो हैव द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज a course which is sometimes become a golden primarily gold standard of many disciplines. Even अगर आप देखें तो जो आपका ये सब्जेक्ट है ये कंपल्सरी डिसिप्लिन के कोर्सेज में आता है। तो दैट्स वाई जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो कैटलॉग है उसमें ये कोर्स का कंप्लीट करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैटलॉग हैं उन्होंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ, उसमें कोर्स नहीं होता बल्कि मेजर कोर्सेज होते हैं और उसमें भी चॉइस होती है। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, मैं थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स के बारे में भी जानना चाहूँगा। तो शेरोज से शुरू करते हैं। इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। जी शेरोज सिटी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? Yes, sir. Assalamualaikum. My name is Shahru Shakil, and I have done my computer graduate in 2019 from Sindh Madrasatul Islam University. Now, in 2020, I had joined in Ahmedabad University, and now I am in at third semester, and I have covered five courses in my my MS. So only 5 courses are left in my MS, and and I am doing in as a assistant manager in IT company, which name is Americom Technology. Americom Technology is a end-to-end solution provider company to the financial sector, like banks, all banks of Pakistan. We have provide end-to-end solution like hardware and software solution as well.
to financial sector. वेरी मच जी। इसके बाद जो है वो हमारे पास मुनीब है। जी मुनीब, आप थोड़ा सा Yeah, Assalamualaikum, sir. Well, my name is Munif Khan. I am a computer engineer. I have been like in a corporate sector for almost 10 years, and right now I'm working like in a project of higher education commission, that it's a normally of academic based project. So, like being in the industry for almost 10 years, like I have total 12 year experience, and because I want to continue my masters, to be honest, I don't have time because of my job nature. So I have started MBA, and then I just pursue with the like fast university. I drop it, and right now I just have the chance to just have a little bit time to just enter into master field again. So right now I've just joined Hamdard University, and Alhamdulillah, like secured a good GPA in the first semester, and like around 3.83. And so luckily I was just looking for the like subject. So because it's proprietary that you have to choose a one core in every semester. So that's why I have just chosen advanced computer network over here, and like there are two more subjects that I have chosen over here. So like being interested, that's why I was asking that, because I have been in the ISP sector as well. I have just work in DWP, and that sort of like different sort of ISPs in multinet, you can say. So I know that core network, how to design a core network. That's why I was design like I asking that we should work on a packet trace and design some sort of scenario, and that I can present to you that these are the actually the working, like how the actually work network, how actually operate. So this is my point of view. I guess you have just mentioned it. You can do it. Like you can just submit a report, and you can submit a project related to it. So, sir, you know that IT, like it's something that is like changing day by day, and it's enhancing day by day. You have to be keep upgrade yourself. So, in parallel, I am doing the project management course as well, PMP, and hopefully it will be like I have to just give some papers, and I will just try to just schedule my exam date. So this is whole my scenario, like being in a like IT industry almost 10 years. I have to just work in a multinational company, different sort of like different sort of vendors company as well. So I have started my career from resident engineer. Right now I'm like manager over in a company. So this is the whole scenario of my life. Hopefully, like we have just joined this course, and hopefully we will learn a lot from you. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. very much Muneeb, you have explained. Now we are moving towards the last participants, the Anas. जी बेटा, आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। Yes, sir. My name is Anas Kurai. I have done my bachelor's from Sir Syed University in 2017, and then I started job in IT departments in Cisco vendor, which is named Future Technology. But then in 2020-21, I have started my master's from Hamdard University. It's my second semester, and currently I'm doing job in Sunari Bank in IT security and governance department. That's all. Thank you very much. So we have a good class. That means the students are already working with the technology, the information technology, and also especially with the computer and the computer networks and the specific technologies like the communication setups and the security, inside security. So I am hoping that the more students will join the class, and we will be having a good discussion during our sessions. So because I get an idea from your introduction that you all are already familiar with the basic computer networks and also the having a hands-on experience. तो इसमें मेरी जॉब जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी. सो वी आर फॉलोइंग ए बुक. पहले उस किताब की तरफ हम चले जाते हैं अब यहाँ से. Okay. So this is computer networking, a top-down approach.
by Burroughs and Ross. The slides which I have shared are based on 6th edition, although we do have 7th edition as well. So we start with the slides from 6th edition, and then we will be updating those slides based on the information which is added in the 7th edition as well. I have shared with you the 6th edition book along with another book by Larry. So we will be using these two books as the text. Now I am moving towards our slides. Few slides we will be covering in this session. So these slides are already shared. We are in chapter 1, and in chapter 1, these are different topics which are covered. There are many slides, but the main objective is to review the basic concepts which are essential towards the next chapters. तो इसमें सबसे पहले जो है वो इंटरनेट से स्टार्ट करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले दो सेक्शंस के साथ लिंक कर रहा है। इसमें मैं एक चूँकि वी हैव ए 40 मिनट सेशन जिसमें तकरीबन 15 मिनट्स अभी बाकी है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can raise your hand through Zoom. Zoom has an option in which you can raise your hand and I will then take your question. So we start with the definition of internet, and this is primarily a simple view in this diagram in which we can see different type of networks. स्टूडेंट्स आप क्या देख पा रहे हैं ये स्लाइड्स? So we can see it, but there is like we cannot see like whole screen. Like we can just read it out. Chapter 1 introduction. I guess you have to just share it again. Okay. It looks Now we can see it. okay. It looks there's some problem with. Let me just it is because of this PowerPoint. Uh, just wait. मैं इसको जरा थोड़ा set करूँ. It looks there is some problem with the PowerPoint actually. Okay. Something funny happens.
ओके, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir, we can hear Yes, sir. you. Yes, sir. Okay, thank you very much. I think I have disturbed some settings on my laptop. So we just continue because only few 10 minutes are left. So somehow it is not turning the slide mode. तो आपको ये slide नज़र आ रही है? Yes, sir. Okay, thank you. So okay, so as you can see on the right, there are few example of networks. One is the mobile network, and another is the home network, and similarly we have an institutional network. So these type of networks are very common, and to connect these networks, as we can see, there is a presence of regional ISP as well as a global ISP. So this type of network is commonplace network and is a general and standard network. So there are many connected devices. We usually call end system as a host, and the host run different applications, and these applications are network applications because they have inside them the network stack built in, जो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, network aware applications. We have communication links, and these communication links are of different types. Today, as of now, we have wireless as a most common medium, but whenever the transmission rate or the bandwidths are concerned, we do have the presence of copper as well as the fiber links. And also there is a technology which is primarily used to forward information, and usually this is known as and implemented in the form of routers and packet switchers. So there is also कि जो different devices use होती हैं उनके क्या types है और उनकी क्या working है, इसको हम डिटेल में जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे. Then there are multiple appliances. इनसे अब हम familiar हैं. पाकिस्तान में भी ये अब काफ़ी ज़्यादा जो appliances है वो available हैं, जिसमें के जो इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है, जैसे एयर कंडीशन है, इसी तरीके से रिमोट कंट्रोल जो होटल्स हैं उनके अंदर रिमोट कंट्रोल से जो कर्टन्स हैं उनकी मूवमेंट है, इसी तरीके से जो लाइट्स हैं, इवन जो नया पैराडाइम बन रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसमें के जो सेंसर्स हैं वो इंटरनेट इनेबल्ड हैं और इंटरनेट क्लाउड के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं और अपने आप को रिकन्फिगर कर सकते हैं by using the configuration information shared through a central repository. तो ये चीज़ें अब आ चुकी हैं और ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हमें डेली लाइफ में भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी. Similarly, the definition of internet, famous definition, the network of networks, and primarily the core is that interconnected internet service providers, the interconnected ISPs. So protocols are primarily the programs, software, and it can be a hardware or it can be a combination of software and hardware which control the message communication, sending and receiving messages. Some examples are given here.
and there are standards, internet standards, so that the device vendors or the software vendors can make their product interoperable with the other vendors. So this type of information is available. So there is a service view. So a service view of the internet is primarily talking about the services which are provide services to different applications, like for example, web, voice over IP, email, games, e-commerce, and social nets. And also it provides the programming interface to different applications. So this is a service view of the internet. Okay, what is a protocol? Protocol को formally यहाँ define किया गया है कि protocol defines a format, a order of message sent and received among network entities and actions taken on message transmission and reception. This is a formal definition, and it's a bookish type of definition. We can say protocol are primarily the set of rules which are linked with the information communication between two entities, or these protocols are primarily in TCP/IP reference model are arranged in the form of a stack, जिसमें के layers हैं और the layers contain different protocols, and these protocols then provide service to the upper layer protocols. इसमें एक एग्जांपल भी दी गई है कि how a human protocol and a computer network protocol can be compared. So on left side, there is a conversation between two persons. They exchange the hello, and then primarily one person asks क्या time हुआ है, and another person replies. So similar communication takes place between two nodes in a computer, and this example is based on TCP, in which a TCP connection is first established and then a file is transferred. So there are other human protocols as well, or also there is a human and computer interaction protocols as well, जिसमें एक छोटी सी एग्जांपल ATM की है कि अगर एक पर्सन जो है वो ATM को यूज़ करता है. Now in this case, one is a person and another is a machine. So we can make a chart or diagram like this, in which a communication takes place between a person who is drawing some amount from the ATM machine. So this is on left side, this is a discussion primarily, or an introductory protocol. We can think of other protocols as well. For example, one person is applying for a job in a multinational company. So what kind of the protocols exist during the interview, the evaluation, and the negotiation, and the final settlement between various parties. So this ends our first section. आज के दिन में मैं चाहूँगा कि हम इसको पहले सेक्शन तक ही रखें, और जब हम नेक्स्ट सेशन में जो संडे के दिन होगा इंशाल्लाह, उसमें जब हम आएंगे तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करूँगा कि जो पहले चैप्टर की स्लाइड्स हैं उनसे सिर्फ गो थ्रू होके आ जाए, ताकि फिर हम छोटी सी डिस्कशन के बाद जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करें. जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई सवाल? Sir, I have a question.
the next class will be on Sunday or will be on next Sunday? यस संडे 2 PM और नेक्स्ट संडे जो है 1 मिनट ज़रा देख लें क्योंकि अभी वो आ गया Sir, है, because नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन जो है वो जी जी से है, वी कैन हैव इट क्लास ऑन संडे. okay. Because sir, like sir, Adnan was taking class as well on like Sunday, and he has postponed it to like further on and the next week because he was taking the class on 16th. So he was saying that because of the Eid holidays, so that's why he has just like moved it further. Okay. So But I'm not confirmed कि like government ने like क्या ऐलान किया I don't know official notification क्या है like from गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. उन्होंने जो है वो सैटरडे से स्टार्ट किया है. अच्छा sir, okay. लेकिन जो क्या कहते हैं जो यूनिवर्सिटी का आज वो आया है कम्युनिकेशन आया है वो मंडे से है. यानी Okay, done. हाँ जो इनका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है वो तो जो है वो 8 तारीख से है लेकिन जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख से है. Say done sir, no issues. Like we can just like continue class on Sunday इंशाल्लाह हम जो है at 2 p.m. इंशाल्लाह 2 PM को संडे के दिन. जी और कोई सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा हो? जी मुनीब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Sir, actually, I was just asking about the schedule of the class. You have already mentioned that it will be on like on Sunday at 2 p.m. I guess we can just continue the class on Sunday. क्योंकि रमज़ान है तो वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ टू 2 सेशंस 2 ऑनलाइन सेशंस ऑफ अबाउट 40 मिनट्स ड्यूरेशन द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 1.5 आवर में जो हमारा नेक्स्ट संडे का जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. Okay, sir. उसके Done, बाद sir. Cool. के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो भी शेड्यूल होगा वो फिर हम तय कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, Say, sir. we'll see you then. If you have any question, you can post in your WhatsApp group. Okay, Allah Hafiz. Okay, sir. Assalamu alaikum, sir.